all those things. But you have to see this and you have to study in your state. You can prepare yourself each state. That is my idea. If we will give here, you can have also idea to how we can prepare that. Then also each state we can prepare the budgets also. How much budgets they are giving to Dalits, how much budget they are allocating, how much budget they are revised estimates, how can they much expenditure. This is also we can go each state. In future action also we will have some idea on that. Center for Dalit Studies here we are preparing all states for Dalit budget, all those things. It will take time, 1 or 2 months. When we will finish each state, we will give to you each state. When give to national coordination, then they will supply. Otherwise also we can take our website. Thank you, please. This is the four basically national schemes. In the national schemes, pre-matric scholarships, the day scholars 3,500 per annum, hostlers 7,000, 8,000 per annum. The group 1 degree and postgraduate level, this is a post-matric, 13,500, 9,500. These are all the only scholarships. You see. Next. The overseas scholarships allotted 125 students. Only 125 students allotted in all India. That 76 crore 2023 budget, 405 students since 2019-20 benefited under the only 450. National Fellowship Scheduled Caste, Higher Education, MPhil PhD degrees in Science, Humanities, Social Sciences, 1932 students benefited in 2012-2013. Only 120 crores. Then national schemes, Ambedkar scheme for intercaste marriages, Deen Dayal Upadhyaya Gramina Kaushalya Yojana, Credit Grant for Fund SC/STs, Kala Sanskriti Vikas Yojana, Special Central Assistance to the Scheduled Caste Subplan. This is very important thing. But these funds are not utilized by the governments also. The state governments also, even Punjab, I think post-matric scholarship is a very big issue in before 3 years back. 2 years back, we intervened, we started some campaign, they released something, but Punjab people very much affected. So many students, they didn't get any scholarship 2-3 years. They don't have any problem. Why? The central government is doing, we will give 40%, you can give 60%. This is the problem. Telangana government decided, we don't want any paisa from you, we can give our own money. Because of the utilization certificate, वो certificate, ये certificate, उसका पूरा दिए तो भी वो नहीं देता. उसके प्रॉब्लम जैसा पंजाब गवर्नमेंट प्रॉब्लम में गया. Even North India, so many states not giving real scholarships. Babu Jagjeevan Ram Chhatravas Yojana, Pradhan Mantri Adarsh Gram Yojana. Next. Incentive for the intercaste marriages. This is also, I think, so many state governments not doing it, but this is also central government. Sorry, this is Andhra Pradesh. Another important thing I want to tell you, so many state governments only implementing central schemes. सेंट्रल से पैसा आता वो दे देता, सेंट्रल से पैसा नहीं आता नहीं देता. तो पंजाब ऐसी हुआ. इसलिए मेनी स्टेट्स वी आर ऑब्जर्विंग देयर इज नो न्यू स्कीम्स इन द स्टेट गवर्नमेंट्स. दे विल ओनली इम्प्लीमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट. Recently I had a contact with the UP government, UP people, UP officers. They asked me to suggest some guidance about the schemes. I asked which fund you are giving, कैसा पैसा आ रहा है, कहाँ से आ रहा है. वो बोले सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा आ रहा है, हम दे रहे हैं. वो स्कीम्स आपका पैसा कुछ नहीं है हमारा बजट में, सिस के लिए कुछ नहीं है. जनरल स्कीम्स रहता, हाउसिंग, एजुकेशन, हेल्थ, वैसा रहेगा. मगर वो सेपरेट स्कीम्स फॉर maintained by the UP or Madhya Pradesh, nothing happened. The incentive for the intercaste, Ambedkar Overseas Vidya, the residential schools. These residential schools also, they not increased in AP. The 195,
already 199, only 4 increased. These are unorganized SC workers, 1870 years, eligible enrolled 5 lakhs. This is an accidental benefit. And free power here, after Saplan impact, they governments Telangana and the government, they are free power to their houses. The government can reimburse the fees to the electricity department. That is one scheme after the Saplan. Houses sites for weaker section, this is also general scheme. सब लोगों को हाउसिंग दे रहा है, हमारा को भी दे रहा है. नेक्स्ट, स्किल अपग्रेडेशन में ये स्किल डेवलपमेंट आल्सो इज अ कमिंग फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, नथिंग एवन. बुक बैंक दिस इज अ ओल्ड स्कीम इन आंध्र प्रदेश. आई टोल्ड, मैं बताया ना कल, ये 1976 में अर्जन कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें दी बैंक, बुक बैंक्स एंड हॉस्टल्स, कॉलेज हॉस्टल्स, ऑल meant for that. Next, Bihar, Antarjatiya Vihav Prosthan Yojana. Under the Yojana to the married couple, intercaste marriage, this is also central government scheme. Bihar Udayam Yojana, self-employment, this is also skill development scheme. The SC 111 SC hostels are being operated for SC ST, 21 new hostels are being constructed in Bihar. I think हमारा सत्यदेव जी बताना है, वो सच है झूठा है, हम ले लिए. वो आप भी जाने के बाद ये देखना पड़ेगा क्या है हॉस्टल्स का हालत क्या है. अनदर रिक्वेस्ट, इफ यू हैव टुमारो एनीबडी इज हियर, वी विल शो दी वन रेजिडेंशियल कॉलेज नियर बाय हैदराबाद आउटस्कर्ट्स. वी विल ऑर्गेनाइज अ ट्रांसपोर्ट फ्रॉम हियर, देन यू कैन सी द हाउ इट इज. सो मेनी स्टूडेंट्स, दे आर गेटिंग Harvard admission, medicine, IIT, all those things. It is useful to understand how will demand in हमारा states में कैसा करना है. Next, Chief Minister Scheduled Caste, Scheduled Tribes meritorious scheme. This is also, I think, SC 10th class students. This is all NGOs देता ना, ऐसा program है. Residential schools, 66 residential schools, hostels 111. Gujarat, Manava, this is the only, I think, if any adding, after that we can add something. What is the... Then Gujarat, Manava Garima Yojana, Savita Ambedkar Interview, these are all again Baba Ambedkar, loan higher study in foreign countries. Loan assistance, lakhs with the 4%, this is very bad. They don't have money, how can they get loan? How can they pay loan? In Karnataka, even Andhra Pradesh, even Telangana, even Kerala, they are giving scholarship directly, nothing in reimbursement. That is in loan. You have to demand that how many students wants to go abroad. We have to pay the total money. This demand should become all our states. We will also demand Telangana government, not any cap, please remove the cap and give to the scholarship support fees. Next, financial assistance housing individual basis. Some name, Mama Sir Padke Ideal Residential. With residential cost 28 schools, catering 400, SC community uploading girls, tablet free. This is also one... this thing, but these all things also comes from the central government. Financial assistance, Kunarbin Memo scheduled caste girls. Under this scheme, girls, the scheduled caste family, given benefit to the beneficiary paid financial assistance 1,000 per girl. Gujarat Saraswati Sadhana Yojana, free of cost bicycle. These are I think next. हरियाणा मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अंतर्जातीय इंटरकास्ट विवाह शगुन योजना, मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना, दिस ऑल मैरिज. दिस डॉक्टर अंबेडकर मेडिकल एड स्कीम. दिस आई थिंक वी हैव ए so many areas. The Arogyasri in Telangana, Andhra is a very high level. Next.
Himachal Pradesh, financial assistance up to 50,000, setting up expansion of income generating avocations. This is, I think, self-employment scheme, but is it low bank linkage or bank linkage is a big problem. Bank linkage, they will not give any bank to the Dalits. The government announce कर देता, सब्सिडी देता 10%, 20%, मगर वो स्कीम नहीं होता. Study loan, the 1,50,000 for full course of 5 years. This is a very bad. The study loan क्या है? Study loan का देने के क्या है? वो कौन लेता है उसे study? Next, दलित वर्ग व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना. This is the training of this thing. Construction shop shed. The corporation provide loan. Hast Shilp Vikas. These are all loans. I think so many states they are giving loan, not by grant. Residential School Society 125 Dr. Bhamber. This is after supply. Then assistance to the law graduate, training for competitive exams, incentive for intra-caste marriage. Next, land purchase scheme, subsidy will be 50% of the term loan. This is I think somewhere better, but this could not be loan. The Baba Jagjivan Ram leather workers housing program, self-employment schemes, litigation training, Unnati 50 lakhs rupee financial support to winning entrepreneurs to development technical based solution. These all we are seeing in Karnataka after Supplan Act only. Kerala intercaste marriage grant, landless rehabilitation, model residential school. There are 9 model residential schools being run by this department, providing better education, marriage grant, institute civil service examination, self-employment scheme, Gadika exhibition cum trade, assistance for seeking employment abroad. The department provides assistance in 1 lakh to job seekers who are willing to seek employment. Housing grant, an amount of rupees 4 lakh given houseless construction houses or dwelling unity housing complex under the mission. Home health centers, homeo health centers. Madhya Pradesh, scholarship for study abroad. How much is this? This is also loan. They are not. Madhya Pradesh, not Kerala. Not Kerala, sir. This is Madhya Pradesh. The supply of uniforms, girls, schemes for admission, meritorious, ISP. These are schemes, I think, all supported by central government. Intercaste marriage, Stand Up India scheme. In order to provide better education to BSS students, best English medium schools, quality education SCS students, pre-matric, school scholarship and stipend SC students, other charges. Nothing have any Odisha also. Maharashtra में? महाराष्ट्र चले गए? महाराष्ट्र चले गए? तो वह पब्लिक डोमेन में नहीं है, आप ऐड करें तो देखेंगे बाद. महाराष्ट्र आया था इंटरकास्ट मैरिज स्कीम, इंसेप्शन ईयर 2021, स्टैंड अप इंडिया स्कीम, कंपोजिट लोन बिटवीन 10 lakhs to 1 crore given SC/ST and women entrepreneurs to the start given field project. These are two things. I think Maharashtra have some other schemes also be there. We can find out what is that. Rajasthan Savitaben Ambedkar intercaste marriage scheme, Ambedkar international scholarship, residential schools, 32 residential school for schools for SC. This after supplan. This is the Rajasthan. Recently they announced this scheme. Next. ఇంకొక 5 నిమిషాలు సార్ అయిపోయింది. తమిళనాడు దళిత్ బంధు గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్, ఇంటర్ క్యాస్ట్ మ్యారేజ్. నెక్స్ట్ 3 acres ల్యాండ్. తెలంగాణ 10% రిజర్వేషన్,
free electricity, SC residential schools 236. Before Telangana only 125, now 236, 35 residential colleges. SC resident 236 residential schools, SC 5,428 teachers, junior college 238, degree colleges 30. The study circles in all over all the district headquarters. SC hostels 854. Next, Kalyan Lakshmi, TS Pride. This is also very industrial program. 2,747 crores. It all comes after the Subplan Act. Next, BR Ambedkar Overseas. They are giving 20 lakh, 10 lakhs. Now the 20 lakhs expanded. Till now 1,031 students benefited. Telangana Secretariat named after Dr. Ambedkar. I think 125 statue you have seen. All you seen? Statue? Thank you. Uttar Pradesh Dalit Udhani Yojana, UP Shadi Udhan Yojana, Government Ashram Pattern Schools, Mukhyamantri Samajik Vivaha Yojana, Scheduled Caste Hostel Scheme, 261 hostels have been constructed, rupees 70% seats are reserved for SC/ST. This is a very the ridiculous thing. They will give only hostel staff, the students not given to money to their food. And you see the conditions of those hostels. Then that conditions बाद में देखेंगे. तो hostels construction कर. नहीं मिलता है वही बोल रहे हैं, वो स्टूडेंट्स लाना है पैसा. मिलता भी नहीं है, सब टूटा है, पानी नहीं है. Next, Shikara Shri scheme, then intercaste marriage scheme West Bengal, micro credit enhanced SCs, project cost 50,000. Educational loan shall be restricted within 90% of the cost of course subject to the maximum rupees 10 lakh. Next. Thank you very much. Hello. So, thank you, Mr. Lakshmaya ji, for presentation of national and state level schemes. We are much benefited on this issue. Now we have to proceed, but before that, I request Professor Krishna, Sri Vikram Singh, Sri P. Rammurthy, Sri Satyadev Ram, and Srimati Devi Kumari to come to the dais. Now they are the members of the Presidium. And Colonel Singh. Yes, be seated. Comments. Friends, as you know that we are running short of time. Yesterday it was announced by the previous Presidium that the name which will be reaching to the Presidium up to yesterday evening, only those names will be participating in today's discussion, because in the morning some 12 more names are coming. So we are having discussion of 170 minutes already. Means already we are have to discuss for 170 minutes. So it's very difficult to accommodate. A, B, it was told that not all the organizations from all the states will be speaking. Maybe one organization, one from 2-3 states or 3-4 states, they will be speaking. So that you people have to bear with this Presidium. So we have to be precise. Earlier it was going for 5 or 5.5 minutes. Today we have to stop at 4 minutes to accommodate more people. Beginning with, I'm requesting Shanta Kumari from Kerala to start the discussion. After Shanta Kumari, Subodh More.
Respected leaders on the dais and off the dais, my dear brothers and sisters. Now we are entering to second day of this national summit. I salute on behalf of the Kerala to all the delegates. Actually, yesterday and some of our representatives presented so many issues they are facing in their own states. And with regarding the Kerala, as you all of know that the left democratic government is continuously in force in the last that is 2016 onwards. And before that, 1957, the first government also introduces many comprehensive, drastic, revolutionary changes in the life of Keralites, especially the backward classes, Dalit, etc. So I'm not going to tell all these things. As some points I would like to present before you that. See, now the government, out of total population of Kerala, 9.1% is the SC population and 1.45% is the tribal populations. So government for considering these Dalit peoples now going to take deliberate measures. That is, first of all, every year the government is now remarked out of total budget for the SC people, 9.8% of the fund is allotted to tribal people, scheduled caste, and 2.48% of out of total budget in every year is remarked to the tribal peoples. And this is especially by giving special incentives, grants, and special schemes like, and some schemes already here shown through the PowerPoint presentation. So I would like to say that actually our government from the alternatively the LDF government, that is left democratic government, had been in force from 1957 onwards. Whenever the LDF government had been in the force, actually Dalit peoples are more considerative on that government. And I can say from the 2016 onwards, continuous, especially we are concentrating on health issues, their social empowerment, and their entrepreneurship empowerments, and educational empowerment also giving more importance by this left democratic government. For that, firstly, we introduce a main project or like welfare measures that is in the field of education. So one of the main important schemes which we already adopted in the field of education is that is giving more consideration and importance to construct a post-matric hostel, pre-matric hostel, modern residential schools, colleges, ITI, like, and even in the sector of sports, especially for the sports, all last whenever the LDF government was in force has been done by this government. Now, one main important program, that is training for the career excellence, one introduced nowadays. That main intention is that is for the 2 years, for the last coming 2 years, the person who got educated, persons of scheduled caste and scheduled tribes, they were appointed in the various departments for 2 years, and the honorarium of them shall be
given by the government directly to them. That is mainly for the enhancement of the skill development as a skill development programs. And according to that, around 500 BTech scholars were appointed in the as accredited engineers in the local self-government already. And legal advisors also already appointed. If a person who completed ITI, they were appointed as the overseers in the electricity board, even in the LSG department, KSRTC like. And nurses who are now, so many nurses who completed BSc, they were doing work in abroad. And 500 beat officers from the tribal community were appointed directly by the PSC. So like many career excellence aiding programs were done by the government. And so I can say that all schemes and welfare measures in this short time. But and not only that, 6 person who belong to scheduled caste, scheduled tribes, now they completed their air hostess, pilot training. That is all aided, and the incentives they're given by the government, fully government by the government. And civil service practices were also. Yes, I would like to say some more suggestions in the future also. That's mainly the Dalit issues on the context of Kerala's. We want to take land issue in future. And other one is regarding the reservation in both central and state government, as well as in the private sector and the aided sector also. And third one is actually we have to take a united struggle for reaching all these things. That is my suggestion. Only 5 minutes? Only 1 minute. Now, yeah. Subodh More. And next speaker, Raichand Paswan. नेशनल दलित समिट में आए हुए सभी प्रतिनिधि और मंच पर बैठे हुए साथियों, कल से ये अपना समिट चल रहा है और कई पॉजिटिव बातें इसके अंदर बहुत से डेलीगेट्स ने बताई है कि दलित इश्यूज़ पे हमको क्या करना चाहिए और क्या क्या पूरे देश के अंदर की स्थिति है उसके बारे में बात की गई है। मैं महाराष्ट्र से आता हूँ। महाराष्ट्र के बारे में बहुत से लोगों के अंदर एक इल्यूजन है कि महाराष्ट्र ये फुले अम्बेडकर का इल्यूजन, फुले अम्बेडकर का महाराष्ट्र है, तो बहुत सी कुछ प्रोग्रेसिव बातें यहाँ होती रहती है। मगर ये जो हमारा एक्सपीरियंस है कि ये इल्यूजन ही है, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर भी पिछले 10 साल से अगर देखेंगे तो कई बड़ी बड़ी एट्रोसिटीज़ की घटनाएं हुई है, जिसके अंदर अभी भी जो न्याय मिलना चाहिए था वो न्याय मिला नहीं है। खैरलान जी के बारे में आपको पता है कि खैरलान जी के अंदर क्या हुआ था। पूरे देश भर में उसको लेकर लोगों ने प्रोटेस्ट किया गया था, मगर खैरलान जी के विक्टिम्स को उनका जो आखिरी एक ये था, उनके जो पिताजी थे वो भी गुजर गए, भैयालाल, मगर अब तक जो पनिशमेंट होनी चाहिए थी वो हुई नहीं है। वैसे ही महाराष्ट्र के कुछ जिले डिस्ट्रिक्ट के अंदर, खास करके अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ 2012-13 से लेके 15-16 तक बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई थी, जिसके अंदर एक मेजर घटना थी जिसके एक दलित 17 साल का नौजवान लड़का था, नितिन आगे, तो उसको भी उस मैटर के अंदर बहुत हमको सबको दुख होता है कि उस मैटर को महाराष्ट्र के अंदर उसके ऊपर आंदोलन भी हुआ, मगर उसके अंदर भी जो कल्प्रिट थे वो सभी को निर्दोष छोड़ा गया और आखिर में उसके पिताजी भी उसकी राह देखते कि न्याय मिलेगा, मगर न्याय उनको मिला नहीं। ऐसी कई इंसिडेंट्स हैं, मैं बहुत से ऐसे एग्जांपल्स बोल सकता हूँ। अभी रिसेंटली नांदेड़ से लेके और कुछ जगह ऐसी घटनाएं हुई है। तो मुझे इतना ही कहना है कि महाराष्ट्र के अंदर जो एट्रोसिटीज़ के मामले हैं और हमारे आज के इस समिट के अंदर हमने ये करना चाहिए कि एट्रोसिटी एक्ट तो है, मगर एट्रोसिटी एक्ट के अंदर की जो प्रोविजंस है उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन कोई भी राज्य में किया नहीं जाता है, इंक्लूडिंग महाराष्ट्र। खैरलान जी के वक्त ऐसा अनाउंस किया गया था कि महाराष्ट्र के अंदर 6 स्पेशल कोर्ट्स खोले जाएंगे,
मगर आज एक भी स्पेशल कोर्ट महाराष्ट्र के अंदर नहीं है, जो रेगुलर कोर्ट है वहीं वो सब मैटर चलाए जाते हैं। तो इसके लिए विक्टिम को जो जस्टिस मिलना चाहिए वो जस्टिस भी मिलता नहीं है। और हम आप सबको पता है कि शुरुआत के दौर के अंदर ही पुलिस के लेवल पे ही ऐसा होता है कि जो प्रॉपर एविडेंस कलेक्ट करना और जो कुछ ये करना चाहिए वो होता नहीं है। तो इसलिए कल्प्रिट हमेशा छूटते हैं कि एट्रोसिटी एक्ट के अंदर। और अभी तो हम देख रहे हैं कि आफ्टर बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद में सेंट्रल के अंदर जिस तरह के अमेंडमेंट हो रहे हैं एट्रोसिटी एक्ट के अंदर 2018 के अंदर अच्छी तरह से उसका एक स्ट्रॉन्ग ये किया गया था, मगर अभी फिर उसको माइल्ड करने का कोशिश हो रही है कि एट्रोसिटी के अंदर बेल मिलता नहीं था, अभी बेल भी ये किया जा रहा है। दूसरा वजह से कि उसके अंदर अभी ऐसी अमेंडमेंट हो रही है कि ऐसी कोई ज़रूरत नहीं मांग रहे हैं कि जहाँ विटनेस कोई होना, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था, मगर अभी कह रहे हैं कि उसके अंदर विटनेस होना चाहिए, तो ये उसके अंदर ये जो FIR लॉन्च हो जाएगा। और महाराष्ट्र के अंदर खास करके पिछले 15-16 इस पीरियड के अंदर जो महाराष्ट्र और बाकी भी हरियाणा हो या पंजाब हो कि जहाँ OBC और बाकी लोगों के इसके अंदर जाट और महाराष्ट्र में पर्टिकुलर मराठा कम्युनिटी के अंदर बड़े बड़े जुलूस, बड़े बड़े मोर्चे निकाले गए और उस मोर्चा से ऐसा किया गया कि आरक्षण के सवाल को लेकर अभी आरक्षण की जो इसके अंदर ही जो ये प्रोविजन हुई है, आप सबको पता है कि आरक्षण का प्रोविजन ये इसलिए हुआ है कि जो सोशो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, जो एजुकेशनली बैकवर्ड है, मंडल आयोग ने जो क्राइटेरिया डिसाइड किया था वो क्राइटेरिया डिसाइड किया था, मगर अभी पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए बहुत से कास्ट को इसके अंदर आरक्षण के अंदर लाने का कोशिश ये हो रहा है। और महाराष्ट्र के अंदर खास करके हमको जो हमारा एक्सपीरियंस ऐसा है कि मराठा मोर्चा जो लाख बड़े मोर्चे निकले, उसके बाद में पुलिस प्रशासन के ऊपर इतना प्रेशर है कि कई मैटर के अंदर एट्रोसिटी एक्ट का जो इम्प्लीमेंट होना चाहिए या गुना दाखिल होना चाहिए, FIR होना चाहिए, वो होता ही नहीं है। और ये उल्टा अभी ऐसा ट्रेंड आया है कि खास करके बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद में कि कल्प्रिट के जो रिलेटिव्स है उनको ही एक्यूज बनाया जाता है और उनको ही अरेस्ट किया जाता है। महाराष्ट्र के 2-3 इंसिडेंट्स के ऐसा हुए हैं, मैं भी इसको डिटेल में जाता नहीं, मगर ये एक्सपीरियंस है कि अभी आपने देखा रहेगा कि उन्नाव के अंदर क्या हुआ, हाथरस के अंदर क्या हुआ कि इतनी इनकी हिम्मत बढ़ गई है कि एट्रोसिटी तो करने की और उसके बाद उनको जिंदा दराने के से लेके बाकी कई बातें होती है और पुलिस प्रशासन इसके अंदर कुछ भी करता नहीं। तो हमको इसको लेकर एक स्ट्रांग कोई एक्शन प्रोग्राम डिसाइड करना चाहिए, ऐसा मेरा एक सुझाव है। दूसरी बात कि अभी ये जो हमने ये किया है उसके अंदर बहुत सी बातें हैं कि जो खास करके इंटरकास्ट मैरिज को लेकर एक यहाँ 16 नंबर के अंदर है। तो इंटरकास्ट मैरिज और इंटर रिलीजियस मैरिज ये दोनों के बारे में हमारा एक ये होना चाहिए कि जो उनके इंटरकास्ट मैरिज करने वाले रिलीजन भी रहेंगे या शेड्यूल कास्ट के शेड्यूल ट्राइब के रहेंगे तो उनको दोनों को बेनिफिट मिलना चाहिए। और उनके जो आने वाली उनकी जो जनरेशन है या उनके बच्चे रहेंगे तो उनको भी उसका बेनिफिट ये मिलना चाहिए। बहुत से बात ऐसा होता है कि इंटरकास्ट मैरिज करने के बाद कई मैटर के अंदर ऐसा दिखता है कि दोनों को मार दिया जाता है। तो दोनों को मारने के बाद में उनका जो बाद में जो उनके वो जो कुछ उनकी संपत्ति रह गया है बाकी उनको उसका जो बेनिफिट वो जिनको मिलना चाहिए वहाँ लीगल बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। तो वो कॉम्प्लिकेशंस को हमको ठीक तरह से ये करना चाहिए, सुधारना चाहिए। दूसरा मेरा एक सजेशन है कि अभी देश के अंदर हम देखते हैं कि नॉमिनेटेड ट्राइब्स जो है बड़ी संख्या के अंदर नॉमिनेटेड ट्राइब्स है और नॉमिनेटेड ट्राइब के अंदर उनके अत्याचार जो है वो भी बहुत बड़ी संख्या में बढ़ रहे हैं। और उसके लिए मेरा एक सुझाव है, यहाँ हमारी कमेटी की ओर से भी सुझाव है कि नॉमिनेटेड ट्राइब को भी एट्रोसिटी एक्ट के इसके अंदर लेना चाहिए जिसके से उनको भी बेनिफिट मिल जाएंगे। क्योंकि बहुत से नॉमिनेटेड हम देखते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर कई जगह उनके घर जलाए जाते हैं, उनको पूरा बेघर किया जाता है। तो एट्रोसिटी एक्ट के अंदर उनका नॉमिनेटेड ट्राइब को भी हम कैसे इंक्लूड कर सके वो हमको सोचना चाहिए। और बहुत बार ऐसा होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ मैटर्स के अंदर एट्रोसिटी एक्ट के अंदर की जो बेल देने का ये था वो बेल अभी इजीली सबको मिल रहा है। तो ये एट्रोसिटी एक्ट कैसा स्ट्रांग करें, खास करके हमको पता है कि नोडल ऑफिसर उसके अंदर रहता है मगर कई राज्यों के अंदर नोडल ऑफिसर है ही नहीं और डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर वो हर 6 महीने के अंदर मीटिंग होनी चाहिए, वो मीटिंग होती नहीं। तो ये कई ऐसे एट्रोसिटी एक्ट और हमारा एक्टिविस्ट का ये कोशिश होनी चाहिए कि उसके फॉलोअप हम कैसे करेंगे। और मेरा आखिरी एक मुद्दा है कि हमको ये सब देखते हुए आज जिस तरह से
देश के अंदर संघ परिवार जो एग्रेसिवली पूरा ये कर रहा है कि संविधान के अंदर के जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर के जो बेसिक जो ये है ह्यूमन राइट्स के से लेकर डेमोक्रेसी तक वो सब क्रश करने का कोशिश हो रहा है। तो हमको इसका पॉलिटिकल एक प्रोग्राम के लेवल पे भी हमारा एक सजेशन इसके अंदर होना चाहिए कि जो पॉलिटिकल इसके अगेंस्ट में हम क्या प्रोग्राम कर सकते हैं, वो भी अगर हम करेंगे तो ही हम मेरे ख्याल से दलित समिट को हम ठीक तरीके से एक दिशा दे सकेंगे और उसके अंदर महाराष्ट्र के और बाकी देश भर के लोग उसके अंदर अच्छी तरह से शामिल हो सकेंगे। इतना ही मुझे कहना है। जय भीम, लाल सलाम। Thank you. Now, Sri Raichand Paswan, SCST Employees Union Railway. Then, next speaker, Mr. PSN Murthy from Andhra Pradesh. सम्मानित आयोजक मंडल, इस ऐतिहासिक नेशनल दलित समिट हैदराबाद में देश के विभिन्न राज्यों से आए हुए सम्मानित सभी डेलीगेट्स, मुझे ये जो 17 पॉइंट देके दिया गया है जिसमें आगे के लिए एजेंडा बनाया गया है, पॉइंट नंबर 7 पर मुझे आपत्ति है। उसमें मेरा सुझाव है, उसमें लिखा गया है मेरिट बेस्ड प्रमोशन की बात। मेरा कहना है जब संवैधानिक तौर पर ये अंतिम रूप से फाइनल हुआ रिजर्वेशन इन प्रमोशन विथ कंसिक्वेंशियल सीनियरिटी, इस बिंदु को मेरा सुझाव है इस रूप में लिखा जाए। दूसरी सुझाव, क्योंकि मैं बिहार राज्य से आता हूं, बिहार की सरकार हाल के दिनों में कुछ गैर संवैधानिक कार्य किए हैं। जैसे शेड्यूल्ड कास्ट के लिस्ट में वहां ऑलरेडी 22 जातियां हैं। उस 22 जातियों में जो लिस्ट है, जैसे पान और स्वासी, लेकिन सरकार बहुत ही चालाकी से जो अन्य वर्ग के लिस्ट में थे, ततमा, ताती एवं खतबे, उनकी जाति ही बदल दी। ऐसा तो गजब हुआ। जस्ट पहले तक उनको जो जाति प्रमाण पत्र मिलता था उसमें जाति के रूप में ततमा, ताती और दूसरे खतबे के रूप में मिलता था, लेकिन सरकार वहां से उस नाम को डिलीट करके, हटा करके उनको कह दिया कि नहीं, ये पान और स्वासी हैं। भला ऐसा होता है क्या? इसलिए हो सकता है अन्य राज्यों में भी होगा इस तरह का। इस पर इस दलित समिट के माध्यम से मेरा ये मांग है, इस तरह का इंक्लूजन पर पूरी तरह रोक लगाया जाए। जब 1950, 1976 में लिस्ट फाइनल हो गया तो पुनः इसमें ये तो इंक्लूजन नहीं, जाति ही बदल दिया। ये सुझाव है, इसको रखा जाए। तीसरा, कल महोदय लोगों के द्वारा आर्टिकल 46 की बात की जा रही थी, जिसमें विशेष प्रावधान हम SC ST के लिए किए जाने की बात है, लेकिन बिहार सरकार इस 46 को व्याख्या गलत तरीके से करके, इंटरप्रेशन गलत तरीके से करके शेड्यूल्ड कास्ट में विभाजन कर दी। जो मुझे समझ में है, यह इसलिए किया गया कि हमारी ताकत कमजोर हो जाए। जो मजबूती से हम लड़ाई लड़ रहे थे, आपस में लोगों को लड़ाने का काम करके हमारी ताकत को कमजोर करने की यह साजिश की गई। इस समिट में यह भी मेरा यही मांग है कि इस रूप में जो विभाजन है, संभवतः आंध्र प्रदेश में भी पहले इस तरह का हुआ था, जो सुप्रीम कोर्ट से अमान्य कर दिए गए, 4 ग्रुप में बांटा गया था। इससे हमारी ताकत कमजोर होगी, इसलिए इसको भी रोकने का जो है डिमांड इस समिट से हो। अब मेरा एक रिक्वेस्ट है, ये सुझाव थे मेरे 3, रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट ये है, भारतीय संविधान में हमारे बाबा साहब पहले ही लाइन में लिखे हैं, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, दैट इज भारत। यानी उन्होंने स्पष्ट कर दिया है इस देश का नाम इंडिया और भारत है, तीसरा कुछ भी नहीं है। तो कम से कम सारे लोगों से अनुरोध है, इसके इतर जो भी नाम लिए जाते हैं, काइंडली उसका उपयोग हम लोग नहीं करें, इंडिया और भारत शब्द ही यूज करें। चूंकि सर का घंटी बज गया, इसलिए लास्ट में चूंकि जो 2050 का ये बना है, जो आगे हम लोग जो प्लान बना रहे हैं,
उसमें मुझे कहना है, इसके बाद मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। जब आंखों में अरमान लिया, 2050 के लिए मुझे ये कहना है, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या, है मुश्किल क्या, आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। Thank you. Now, Mr. PSN Murthy from Andhra Pradesh, and the next speaker, Guljar Singh Goria from BKMU. Jai Bhim to everybody. There used to be one law enacted in 1850, Caste Disabilities Act, that has been repealed by Modi government in 2018. That repeal should be challenged, and as far as the caste is concerned, the vision of Ambedkar is to build a casteless society. For a casteless society, it is the Dalit National Summit which has to take a leading voice, and the caste should be abolished and it should be made into an act. That should be one of the demands of this summit. Point number 2, Constitution of India is complete and holistic as far as the religious freedom is concerned. Article 25, 26, 27 and 28. But there are 9 or 10 anti-conversion laws in the country which are going against the spirit of the Constitution. This summit should demand that all the anti-conversion laws should be repealed. The spirit of the Constitution should be upheld. This is point number 2. Point number 3, democracy has to survive for the Dalits to survive in the country. For a democracy to be full in the country, backward classes and women should get equal share of representation in the legislatures in the states as well as national parliament. That should be one of the demands of this session. Point number 4, socialism is the guiding principle behind directive principles of state policy. Directive principles of state policy, part 4 of the Constitution, are aimed at state socialism or Fabian socialism. And the socialism concept has been totally disowned by all the governments. And the demand of this session should be implement directive principles of state policy in toto, without any compartmentalization. There should be a 5th demand from this forum, that is wages. There is a minimum wages act in each state. There is a Manrega act in the national level. The Manrega wages are less than the minimum wages act, which is not at all in consistence with the Constitution of India. Therefore, Manrega wages should be on par or above the minimum wages in each state. That should be one of the demands of this forum. 6th point, there is a huge amount of discrimination during the process of interviews for every recruitment. Dalits, backward classes and scheduled tribes are always ordered by the recruiting agency to keep them within the reserved limits when the interview marks and the written test marks are combined together. Because of this kind of an indirect directives, huge loss is happening to the Dalit community and backward classes and scheduled tribes. So this forum should demand there should not be interviews for any examination, including IAS examination. Written test should be the only criteria for selecting the candidates. With regard to education, we may have different
silos in different states. But our demand should be for scheduled castes and scheduled tribes, education from LKG to PG should be free and residential. This should be the national agenda as far as the education is concerned. And now we are a nation within a nation. If the government of India does not take appropriate steps for removal of untouchability, which is practiced in more than 50% of the villages, the scheduled castes should give their voice that we are a nation within a nation, we need a separate recognition. Unless we come up with this kind of a demand, untouchability can never be addressed in this country. Lastly, there is a scheme called Dwakra in Andhra Pradesh and Telangana. There is a saving cum investment scheme for women empowerment. Similar schemes should be implemented across the nation for scheduled castes and scheduled tribes. Saving and investment proportionately, there is a scheme to be worked out. And lastly, no imposition of Hindi as a national language in the non-Hindi speaking areas, no denial of English in the name of promoting regional languages. English should be promoted across the country in all the states, and that promotion should be funded by the government of India in addition to the state government's budgets. Thank you very much for giving me this opportunity. Now, Shri Guljar Singh Goria from BKMU. Then, next speaker, Mr. Lenin Kennedy, State Coordinator, Technical Union. Friends, from behalf of the Bharatiya Khet Mazdoor Union, as a General Secretary, I want to take your very little time. First of all, I congratulate you. We are assembled here. Very important agenda. Social democracy, social issues, social and economic emancipation of the toiling people in our country. But the facts, land is not clearly distributed, continuously caste oppression, question of reservation, question of untouchability, poverty, many things we have already discussed here. Atrocities also. How much time we will tolerate it? How much give more time to bear such type of atrocities and discrimination and caste oppression in our country? This is the first question I put before you. My thing, if we want that other people, ruling people, dominant castes will fight for our demands, we are in big illusion. It's our fight. Our unification is very much necessary. Maximum possible unification of our peoples is utmost necessary in our country. I say salute to those people who since before independence and after independence fight for these just demands. We are not, it is not the first efforts. Since long times, we are fighting against such type of atrocities. So in this situation, first we should remember those people who are fighting for this caste action. Next also, Dalit agenda, social justice question is not the only of the Dalits only. It's the question of our country, question of the whole society.
those people who are so-called upper caste, but they gain in the society. So in this situation, we should say broader appeal for all the real thinking of our society. Okay, you should help this movement from various sides. So many intellectuals, so many democratic forces, so many political parties, so many outputs. They should help in this just cause. From this action plan, I appeal to the organizer. Lastly, we should say a humble request, humble appeal, all the countrymen, they should support from letter and spirit, because it is the biggest task of our country. Next, the agenda we have discussed, we should more active, more unified in the next days, because at the center we are facing such a type of ruling party which is again reviving the Manusmriti, old prejudice caste system they are trying to revive. So in this situation, our main political task that in the coming parliament election, we should give a big defeat to those people who are against Dalit and caste forces. And we should raise our main agenda. We should mobilize our people in our country. No political party should dare to bypass our demands. Such type of environment we should create in our country. This is our main political task before us. So, in this situation, we should organize the million of the people. We are unify all the people, so it will give a good result and good efficient country, and all our country people looking the Hyderabad summit, what the decision we have taken. So in this sense, I hope from the Bharati Khet Mazdoor Union, we are fighting since 1968 for this cause and big contribution in this movement. So thank you for your given time. Thank you. Now, Mr. Lenin Kannedi from Tamil Nadu. The next speaker, Shyam Bharati from Bihar. தேசிய தலித் உச்சி மாநாட்டிலே இந்த மேடையிலே அமர்ந்திருக்கக்கூடிய பெருந்தலைவர்களே, அமைச்சர் பெருமக்களே, இந்த கூட்டத்திலே வந்திருக்கக்கூடிய என்னுடைய தோழர்களே, உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் நான் சார்ந்திருக்கக்கூடிய தமிழர் உரிமை மீட்புகளம் சார்பாக இந்த நேரத்திலே காலை நேர வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு, இந்த கூட்டத்திலே பேசுவதற்கு வாய்ப்பளித்த, கலந்து கொள்வதற்கு வாய்ப்பளித்த தமிழ்நாடு தீண்டாமை ஒழிப்பு முன்னணியுடைய நிர்வாகிகள் அத்தனை பேருக்கும் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு, அட் திஸ் டைம் ஐ வில் பிகின் மை ஸ்பீச் ஆஃப்டர் பேயிங் ரெஸ்பெக்ட் டு த கிரேட் ரெவல்யூஷனரி டாக்டர் அம்பேத்கர் அண்ட் சோசியல் ரிஃபார்மர் தந்தை பெரியார், த கிரேட் ஆஃப் நாலேஜ் பெருமாள் பீட்டர், த ஈக்குவல் ரைட்ஸ் ஃபைட்டர் தியாகி இம்மானுவேல் சேகரன், and congratulations, thanks and cabinet to the Telangana government and Honorable Chief Minister Chandrasekhar Rao for constructed the world largest statue of the world greatest social revolutionary Dr. Ambedkar. I am putting forward 5 demands or 5 suggestions to you for the rights of the people of scheduled caste and scheduled tribes. First one is, how is it 10% reservation possible for forward classes? Similarly, we should strive to increase reservation for scheduled caste and scheduled tribes at the center and in the state. Second one is, everyone should raise voice to increase the number of scheduled caste and scheduled tribes parliamentarian in parliaments and legislators in the states assemblies to voice our rights. Third one is, the central government
should enact legislation to provide at least 50% reservation for scheduled caste and scheduled tribes in private sector or private organization. Fourth one is, earlier in Tamil Nadu, land was given to the landless scheduled caste people in the name of Panjami land. Likewise, a law should be passed to give at least 5 acres of land to the landless scheduled caste and scheduled tribes people all over India. Fifth one is, the amount provided by SC/ST subplan should be given on the basis of the population of SC/ST peoples in the respective states. 60% of that amount should be used for the education development and for starting the business of SC/ST peoples. To monitor this, a separate commission should be formed in an all India level with the coordination of SC/ST parliamentarians and legislative members. And the final is, let us remove the Narendra Modi gangs from power. Let's remove BJP and RSS gangs from this earth. Let us commit to get equal rights and social justice in India. Thank you. Thank you. Now Shyam Bharati from Bihar, and next speaker Sagar Baidyakar from West Bengal. अध्यक्ष मंडल के साथियों, इस दलित समिट में आए हुए पूरे राज्य के प्रतिनिधि मित्रों, सबसे पहले मैं बिहार दलित शोषण मुक्ति मंच की ओर से आपको जय भीम लाल सलाम। अभी जो लोकतंत्र, संविधान और संघीय ढांचे पर जो खतरे हैं, इसके संबंध में अभी भी दलितों का एक हिस्सा खतरा महसूस नहीं कर रहे हैं। आज जो संविधान समाप्त करने की कोशिश हो रही है, यह जो खतरा है उसको भी आज दलितों के एक हिस्से नहीं समझ रहे हैं। जहां तक बिहार का स्थिति है, बिहार सबसे बड़ा सामंती राज है और गरीबी के में सबसे गरीब राज्य है। बिहार में आज भी सामाजिक उत्पीड़न हो रहे हैं। बिहार में आज भी सामंती जोर जुल्म अत्याचार है। बिहार में आज भी बड़े पैमाने पर गरीबों के बहनों के साथ, बेटियों के साथ, छोटी छोटी बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न की घटनाएं हो रही है। बिहार में सरकार बदली है, मगर आज भी बिहार में जो मशीनरी है, वह मशीनरी आज भी बिहार में है। भाजपा मानसिकता के मशीनरी है, जिसके चलते आज बिहार में बड़े पैमाने पर बिहार के अंदर दलितों पर हमले हो रहे हैं, नवधनाढ़ वर्गों के द्वारा हमले हो रहे हैं, अपराधियों के द्वारा हमले हो रहे हैं। उस हमले में हस्तक्षेप भी हो रही है। बड़े पैमाने पर हम बताना चाहते हैं, जो बिहार के अंदर जमीन का सवाल आज भी मुख्य सवाल है। बिहार में जब श्री बाबू के नेतृत्व में विधानसभा में भूमि सुधार कानून लागू करने की बात हुई थी, लेकिन भूमि सुधार कानून लागू नहीं हुआ। अभी बिहार में डी बंदोपाध्याय की रिपोर्ट बनी। उस रिपोर्ट ने कहा, जो बिहार में दलितों को 1 एकड़ जमीन जोतने के लिए 10 डिसमिल जमीन बांस के लिए दिया जा सकता है, लेकिन इस पर अमल नहीं हुआ। अभी बिहार के अंदर जब संघर्ष हुए हैं, आंदोलन हुए हैं, तब बिहार सरकार ने 5 डिसमिल जमीन भूमिहीनों को देने का घोषणा किया है। लेकिन अभी भी जो जमीन गरीबों को मिलना चाहिए, सरकारी घोषणाएं हो गई, लेकिन भूमिहीनों को जमीन नहीं मिल रहा है और बुलडोजर की तलवार अभी भी गरीबों पर लटकी हुई है। बड़े पैमाने पर बुलडोजर से गरीबों को बेदखल किया गया है। बड़े पैमाने पर गरीबों को जमीन से बेदखल किया जा रहा है।
50 वर्षों से लोग जमीन पर बसे हुए हैं, घर बना के रह रहे हैं। नवधनाढ़ सामंतों के द्वारा अपराधियों के मिली भगत से उन गरीबों को उजाड़ा जा रहा है। एक नई संस्कृति बिहार में शुरू हुई है। सामंती लोग कोर्ट चले जाते हैं और कोर्ट जाने के बाद एक आदेश ले आते हैं और जिस आदेश के चलते गरीबों पर बुलडोजर चलती है, गरीबों को जमीन से बेदखल किया जाता है। आज दलितों के सांस्कृतिक आधार पर, धार्मिक आधार पर, जातीय आधार पर भी हमले हो रहे हैं। हम बताना चाहते हैं, जो बिहार में अभी पटना में बागेश्वर बाबा गए थे, हिंदू राष्ट्र की घोषणा कर रहे थे, दूसरी तरफ उसी बगल में बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ी जा रही थी। ये बिहार में हो रहा है। हम बताना चाहते हैं, जो आज बिहार के अंदर जो सामाजिक उत्पीड़न है, उसके साथ साथ आर्थिक मुद्दों पर भी बिहार के अंदर संघर्ष हो रहे हैं। और हम बताना चाहते हैं, जहां से मैं आता हूं, दरभंगा जिले में अभी 15 ऐसे दलित उत्पीड़न की घटनाएं हुई 3 साल के अंदर में। हमारे आंदोलन और संघर्ष के बाद उन तमाम लोगों को जेल में भेजा गया है। लेकिन एक चीज जो जानने की बात है, बिहार में SC/ST एक्ट को कमजोर किया गया है, जो उसको 7 साल के सजा के दायरे में रखा गया है और जिसके चलते अधिकांश जो दलित उत्पीड़न के अभियुक्त होते हैं, वह उनको जमानत मिल जाती है, अग्रिम जमानत मिल जाती है, जिससे बड़े पैमाने पर जो हमलावर हैं उनका मनोबल बढ़ रहा है। इसलिए हम आज इस समिट के माध्यम से कहना चाहेंगे, जो आज हम हैदराबाद में आए हैं, ये जो संविधान पर खतरा है, उसके खिलाफ देशव्यापी आंदोलन की घोषणा होनी चाहिए और सभी राज्यों में इसी तरह का कन्वेंशन आयोजित होनी चाहिए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। इनकलाब जिंदाबाद, जय भीम। अच्छा, before Sagar Badekar, just one important personality present here. I am giving Professor Krishna, the Central University, to greet this summit. Please. थैंक यू प्रेसिडेंट। मैं हिंदी में बोलूँगा। देश के कोने कोने से आए मेरे दलित बंधु और मेधावी पुरुष, मैं अपनी ओर से और दलित अध्ययन केंद्र हैदराबाद की ओर से आप सबका स्वागत करता हूं। मैंने सोचा नहीं था कि मुझे कुछ बोलना है, फिर भी मुझे मौका दिया गया है, कुछ बोलूं। बहुत संक्षेप में ही सही, कुछ दलित एजेंडा के साथ जुड़ा हुआ उच्च शिक्षा के संबंध में एक दो बातें मैं रखना चाहता हूं आपके सम्मुख। पहली बात तो ये है कि प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा के साथ साथ उच्च शिक्षा भी बहुत खतरे में है। खासकर केंद्रीय विश्वविद्यालय जो हैं
केंद्रीय विश्वविद्यालय में आजकल जो घट रहा है एकेडमिक और प्रशासनिक दोनों स्तरों पर बहुत ही चिंताजनक है। मैं प्रशासनिक इसलिए कह रहा हूँ कि पूरे देश में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के एकाध आचार्य को छोड़कर कोई दूसरे आचार्य उच्च पदों पर आपको उपलब्ध नहीं होंगे। और इसलिए उपलब्ध नहीं होंगे क्योंकि ये जो वर्तमान सरकार है, वर्तमान सरकार स्वयं ये नहीं चाहती हैं कि कोई शिक्षित अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति उच्च पदों पर पहुँचे। और उच्च पदों पर पहुँचने से उनको ये खतरा लग रहा है कि अगर कोई अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का आचार्य जो उनकी विचारधारा से उनके विचारों से संबंध नहीं रखता है या नहीं मानता है तो गड़बड़ कर देगा। तो जानबूझकर उच्च संस्थानों में उच्च शिक्षण संस्थानों में अपने लोगों को भर रहे हैं। वास्तव में ये आज का खतरा नहीं है, आने वाले पूरे भविष्य के लिए, हमारे भविष्य की जितनी भी पीढ़ियाँ हैं उनके लिए भी खतरा है। मैं चाहता हूँ अन्य मुद्दों के साथ इस मुद्दे को दलित एजेंडा में बड़े सक्रियता के साथ जोड़ना चाहिए, क्योंकि जितने भी हमारे दलित बंधु दलित भाई शिक्षित हो रहे हैं, विश्वविद्यालय में एक सपना लेकर पहुंचते हैं। सपना एक स्वस्थ जीवन, उच्च जीवन बिताने का सपना लेकर जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचते ही आप लोगों को पता है रोहित वेमुला के साथ क्या हुआ है, हमारे ही विश्वविद्यालय में हुआ है। और मैंने उसका विरोध किया, विरोध ही नहीं किया, जिस पोजीशन पर मैं था, जिस पद पर मैं था, मैंने रोहित वेमुला के पक्ष में खड़े होकर इस्तीफा भी कर दिया है। पूरे विश्वविद्यालय में आप ढूंढेंगे कोई ऐसा आदमी नहीं मिलता है जिन्होंने रोहित वेमुला के पक्ष में खड़े होकर इस्तीफा दिया। तो हमने देखा है उच्च शिक्षण संस्थाओं में किस तरह का भेदभाव होता है जाति को लेकर, हमने भोगा है। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, नम्र निवेदन करता हूँ कि इस दिशा में भी हम लोग सोचें और कार्यक्रम में कुछ चीज़ों को रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। सपन बाद में अभी टाइम फॉर टी ब्रेक। जस्ट ये ओके सॉरी नो 11:30 से 12 at 12 ओके। वेंकट जी टी ब्रेक at 12 After 12:50 will continue. 12:50 I will introduce the speaker. Yeah, that's right. Okay. So now tea break will be by 12 o'clock. So let us continue. And now Sapon Badakar from Bengal. And next, ready, Mr. S. Sibalingam, People Monitoring Committee, Telangana. Sagar Badakar.
welcome to the reception committee and presidiums, especially the organizers who has organized such a Dalit summit. And I like to draw some matter before you. Hey? In our state, you know, there are the Trinamool government 2011 to and state government and central government. Both government are trying to break and to divide the caste communities. So I can tell you that the agenda note that is delivered a big challenge to us, how to combat our identity. Identity politics has come such a horrible ideas. And the second is the reservation and livelihood of SC and ST, now in danger of our state. MGNRGS worker are totally deprived doing their work, and a vast due payment still at about 2 years. So a action taken program should be required, which we may able to annihilate or to uproot the government as well as Trinamool and BJP. In West Bengal government, you all know, is running on the full of corruption. And the government is trying to abolish the reservation system. And you all know that the ex-education minister is now in jail. And lot of leaders of Trinamool, they are in the front of ED. But our task is very difficult to define BJP and to defeat Trinamool. But as a mass organization, we have to raise a voice to save the constitution, to save the social justice, and to save the SC and STs. Thank you for all. So thank you. Now, Mr. S. Sivalingam from Telangana. Next speaker, Shudhan Das from Tripura. అందరికీ జై భీమ్. ఒకసారి గట్టిగా జై భీమ్, జై 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 భీమ్, జై 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 భీమ్. మిత్రులారా, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇందాక మనం చూసాము స్కీమ్స్ ప్రధానంగా దళిత ఎంపవర్మెంట్కి, దళిత ఆత్మగౌరవానికి ప్రతీక అయినటువంటి భూమి, ల్యాండ్. ఈ యొక్క భూమి అనేటువంటి
మెయిన్ ఎజెండాగానే ఇప్పుడున్నటువంటి ప్రభుత్వం కూడా అధికారంలోకి వచ్చింది. దళితులకి 3 ఎకరాల భూమి ఇస్తామని చెప్పి ఇప్పుడున్నటువంటి గవర్నమెంట్ ప్రామిస్ చేసింది. కానీ తీరా చూస్తే మొత్తం 2014 నుంచి 2023 వరకు కేవలం 6,795 కుటుంబాలకు మాత్రమే భూ పంపిణీ చేయడం అనేటువంటిది చూస్తున్నాం. ఇది ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి లెక్కనే, మీ చేతులలో కూడా ఉంది. ఇది కేవలం 17,000 ఎకరాలు మాత్రమే, మొత్తంగా చూస్తే 17,000 ఎకరాలు మాత్రమే భూ పంపిణీ చేయడం అనేటువంటిది. ఇప్పుడున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో భూమి అనేటువంటిది జీవనాధారం, ఆత్మగౌరవం, అన్నిటికీ ప్రతీక. కాబట్టి నెక్స్ట్ వచ్చేటువంటి అంటే గవర్నమెంట్ ఈ ప్రక్రియ నుంచి దూరం అయ్యేటువంటి ఒక చర్యల్లో ఉంది. దీని కంటిన్యూషన్లో భూ పంపిణీని ఉండాలని చెప్పేసి ఒకటి. రెండవది, మహిళలకి బాలికలకి విద్య, వైద్య, సామాజిక, ఆర్థిక రంగాల్లో రాణించేందుకు గాను ప్రత్యేకమైనటువంటి పథకాలు కావాలి. ఇప్పుడున్నటువంటి మనకి ఇక్కడ ప్రభుత్వం, తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఇస్తున్నటువంటి దాంట్లో మొత్తం కూడా నిర్వీర్యంగా ఉంది. ఇది మహిళలకి 50% రిజర్వేషన్ ఎస్సీ, ఎస్టీ, ఎస్డిఎఫ్లో ఉండాలి అని చెప్పి, అట్లాగే కులాంతర వివాహాలకు సంబంధించి సుమారుగా 3 years 3 సంవత్సరాల నుంచి ఇన్సెంటివ్ రావడం లేదు. అంటే మనం చెప్పుకోవడానికి పథకాలు ఉన్నాయి, బట్ అమల్లో లేదు. ఈ అన్నిటిని కూడా అమల్లోకి తీసుకొచ్చేందుకు ప్రత్యేకమైన చర్యలు ఉండాలని. మరి ముఖ్యంగా ఈ అన్నిటికీ బడ్జెట్ అనేటువంటిది ఇంపార్టెన్స్. మనం చాలా కోరికలు కోరుతా ఉన్నాం, చాలా డిమాండ్స్ మనం ఎజెండాలో పెడతా ఉన్నాం. బడ్జెట్ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి నేషనల్ వైడ్ ఎస్సీ ఎస్టీ సప్లాన్ చట్టం కోసం మనమందరం కూడా కంకణబద్ధమై దళిత్ సమ్మిట్లు పెట్టాలని చెప్పి కోరుతూ జై భీమ్. Now, Mr. Sudhan Das from Tripura, and next, next, 1 minute, Mahesh Kumar Rathod from Karnataka. Respected Presidium, leaders and all delegates, I first up congratulate to all of you. I behalf of Tripura Tapshili Jati Samanway Samiti, that is Tripura Scheduled Caste Coordination Committee, present situation is Tripura is not at all idle for exercising democratic and constitutional rights. Normal activities of the opposition parties and march and class organization are practically not permitted, not easily active these activities. This situation was developed right after the BJP IPFT combined win the State Assembly election 2018. It worsened further after the alliance won for the second consecutive terms in 2023. The terror tactics was made more aggressive with relentless incident of attacks. There have been 6,088 incidents of attack till now since 2nd March 2023, out of which the incident of attack on the people from scheduled caste in 2015. A new trend in the serious attack has been noticed after the last assembly election. The attacks are being organized to destroy the targeted people financially. Their all means of livelihood and income are being demolished. For example,
ponds are being poisoned, drainaged, or all the fish are taken out. Rubber plantation are cut down or burned completely. Vegetable orchard are destroyed. Shop are forcibly closed or looted or vandalized or goated down. Small traders, meat, fish, vegetables are forcibly stopped from entering the market. Owners, drivers of auto rickshaw vehicles forcibly prevented from playing vehicles. Pump operator, midday meal workers, Anganwadi workers are being demolished, dismissed from their work. Job card holder under MGN worker forcibly stopped from getting work. Names of approved and house scheme stop it. This is situation of Tripura. The affected family are mostly scheduled caste, but one thing is sure: the democratic people have maintained their movement for restoring democracy in Tripura, braving even the fascistic attack. Our organization has taken up program of activities in our matters, organization and much agitation. One point is raised, action plan to aid this, the maximum scheduled caste student not able to scholarship and stipend because income bar 2,50,000 limit for income bars. Lakhs of students are so weaker section reservation income bar 8 lakhs. Why not a scheduled caste family income bar raise? I raise this point, and we have to organize the deprived and oppressed people and build up a massive movement against the BJP throughout the country, involving all Dalit, democratic and secular people with a massive to save the country, democratic and constitution from the onslaught of RSS BJP. A united movement of the working people is to be taken forward. Thank you for all. Now Mr. Dr. Mahesh Kumar Rathur from Karnataka, AIDRM. And next speaker, Mr. No, speaker. Stop it, tea break. No. Comrade 12. प्रेसिडियम एंड और साथियों, मैं इस जो एक्शन प्लान है 17 एक्शन प्लान को मैं ऐसा देख रहा हूँ कि ट्रेड यूनियन के जो चार्टर ऑफ डिमांड रहते हैं उस तरह का हमारा डिमांड है कि सरकार ये इम्प्लीमेंट करने के लिए हम सरकार को फोर्स कर रहे हैं। ये हमारा जो यूनाइटेड बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पे मिले हैं, तो यूनाइटेडली हम इसको सरकार के ऊपर दबाव डालने के लिए, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए दबाव डालने के लिए क्या करना चाहिए, वो कॉन्क्रीट प्लान इस समिट में आउटकम आना चाहिए। ये इस तरह का मेरा सोच है। और इसमें 2-3 और ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी जो ये सब माहौल चल रहा है, मणिपुर में चल रहा है और हर स्टेट में चल रहा है, उसके लिए एक बेसिक ये है जो मॉरल पुलिस के नाम पे नैतिक पुलिसगिरी बोलते हैं। हमारे कर्नाटक में स्पेशली मंगलूर रीजन में
बहुत ज़्यादा मॉरल पुलिसगिरी के नाम पे मॉब लिंचिंग और बहुत सारे ये दलित के ऊपर अट्रॉसिटी होता है, तो उसके लिए उसके खिलाफ उसको रोकने के लिए एक कॉन्क्रीट प्लान क्या चाहिए, वो सब मिलके एक्शन प्लान करना चाहिए। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। कर्नाटक के गुलबर्गा में आरएसएस ने एक ये किया था, जो आज़ान के खिलाफ हम हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए पढ़ते बोल के वो एक्शन करना शुरू किए, जो हम सभी दलित ऑर्गेनाइजेशन मिलके उनको ओपनली चैलेंज किए। आप कैसे रोकते हो, आके रोकिए, हम पूरे जो आज़ान पढ़ते हैं उनके प्रोटेक्शन में हम खड़े हैं बोल के जाके मस्जिद के पास ठहर गए, तो एक भी सामने नहीं आया। वो वहाँ पे वो आरएसएस वाला वो एक्शन, वो जो उसका मूवमेंट था वहीं पे रोक के वापस चला गया। और एक ये है जो रावण दहन के, इसमें हम रावण दहन करते हैं ना, तो किस रावण दहन के लिए खिलाफ हम भी आवाज़ उठाए गुलबर्गा में, कलबुर्गी में, तो उसको भी वो हम रावण दहन के खिलाफ राम दहन करते हैं बोल के इस तरह का आवाज़ उठाया, तो रावण दहन का भी प्रोग्राम रोका गया। इस तरह का हम जो आरएसएस का प्लान रहता है, प्रोग्राम रहता है, उसके खिलाफ हम एक्शन में उतरे तो उसको सेटबैक कर सकते हैं। ये मेरा सुझाव है। और जो ये जाति कास्ट जो हम अबॉलिश करना चाहते हैं, उससे बाहर आना चाहते हैं, तो उसके खिलाफ एक एक्शन प्लान रहना चाहिए। जो हम बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस है, प्रोग्रेसिव लोग हैं, कर्नाटक में एक ये होता है अंतरजातीय विवाह सम्मेलन होता है, जो इंटरकास्ट मैरिज करते हैं उसको बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कुछ पैसे देती है, मगर प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन सब मिलके, प्रोग्रेसिव संगठन सब मिलके अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देने के लिए अंतरजातीय सम्मेलन करने का बहुत ज़रूरी है। इसलिए वो कास्ट से बाहर निकलने के लिए एक माहौल बनता है। तो ये दो विषय ऐड करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करते मेरा बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, लाल सलाम। अच्छा, नाउ मिस्टर बी वेंकट will present the scheme of action to the summit, and after that we will go for tea break. Friends and comrades, Presidium, today and yesterday we are discussing many things. After lunch, our beloved leader, our guide, always is participating directly, indirectly. Professor Tarot, he will give his address on these movements. Before that, many delegates there say here, November 5th, last year, we have held one convention at Delhi. Now after that, we are met here. How long, how many times we are conducting this type of seminars or symposiums or METs. So that weakness is there. That's why today we have discussed our like-minded leaders, our reception committee and coordinating body. We have discussed some future activity, future course of programs. I will propose from this committee. First 3-4 programs we will discuss here also. First one is state conventions. State convention, every state. That is the one program. The schedule of time, September, October, 2 months, statewide convention. That is one program. Second program, we will take 1 crore signature campaign.
signature campaign, at least 1 crore. Third one is March to Parliament or March to Delhi, December 4th of this year. Fourth one is go to grassroots level, meet our families. The 4 activities. Once again, first one is state conventions on September and October. What the purpose of these state conventions? That is the important thing. Already I told some information I given yesterday. Now the registration committee, they given information 322 delegates attended this